So here is the detailed guide on NEET UG undergraduate examination. So हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्कोरिंग, कट ऑफ, काउंसलिंग एंड टिप्स के बारे में. सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नीट एग्जामिनेशन. सो नीट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. दिस इज द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू MBBS, BDS, आयुष, BMS, BHMS एक्सेट्रा एलाइड कोर्सेज इन इंडिया. ये एग्ज़ाम NTA के द्वारा कंडक्ट होती है, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. And all the medical colleges, including government, private, deemed, central, use NEET UG scores and marks for their counseling. So now let us talk about the eligibility criteria. So age parameter के लिए minimum age है 17 years और upper age as per the current regulation there is no upper age limit. And academic qualification की बात करें तो the candidate must have passed 12th with physics, chemistry and biology and English as their core subjects. Now PCM students can also appear for this NEET exam. Now हम बात करते हैं minimum marks for qualifying the exams in the board. So जनरल के लिए 50% है, OBC SC ST के लिए 40% है और PWD के लिए 45% aggregate in PCB examination. Now number of the attempts. तो अभी के लिए no limit on the number of attempts, that is you can reappear as many times as you satisfy age and academic criteria. And the nationality should be not only should be Indian, but you can Indian, NRI, overseas citizen or PIO for eligible in the examination. Now exam pattern. So mode of the exam is offline only, pen and paper with OMR based system. बीच में बात हो रही थी कि ये एग्ज़ाम को ऑनलाइन शिफ्ट कर दे, बट टिल नाउ इट्स ओनली ऑफलाइन पेन पेपर सिस्टम बेस्ड. एंड क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, सो नो नीड टू वरी अबाउट द लैंग्वेज. नाउ टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस. सो इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल आर कंपल्सरी, दैट इज़ नो ऑप्शनल क्वेश्चंस. This is the changed point, so please note about this, that is all 180 questions are compulsory and there is no optional questions. So subject wise distribution हम देखें तो फिजिक्स में 45 questions, केमिस्ट्री में 45 questions और बायोलॉजी में 90 questions including botany and zoology. So total is 180 question and the maximum marks are 720. Because 180 questions into 4 marks each, so it becomes 720 marks question paper. And the marking scheme is like +4 for every correct answer and negative marking -1 for incorrect answer and 0 marks for unattempted questions. And if you have marked more than one option, then it is considered wrong and not unattempted. So please note it is wrong and so -1 will be applied on that question. अब ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे हैं, like 180 minutes for the examination. And syllabus is based on physics, chemistry and biology of 11th and 12th standard and it is prescribed by NTA. एंड टाइप ब्रेकिंग रूल्स भी NTA के द्वारा ही सेट किए गए हैं, लाइक 2 स्टूडेंट्स या 2 से 3 ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स आए हैं तो उसमें कैसे रैंक दिया जाएगा. तो पहले तो बायोलॉजी के रैंक देखे जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के एंड मैनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर सेटेड बाय NTA. अब होता है क्वालिफाइंग वर्सेस एडमिशन कट ऑफ्स. So these both terms are different. Let us understand that qualifying cutoff. तो ये है minimum score that a person must achieve to be declared or qualified eligible for the counseling, and it is given by NTA with the results, and this is the threshold score for the merit list. Means ये score अगर आपका आया है तो ही आप एग्ज़ाम में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू फॉर अपियर टू द काउंसलिंग. नाउ द एडमिशन कट ऑफ और क्लोजिंग
cutoff. It is the rank for the particular college or seat in a round. वो डिपेंड्स करता है डिमांड, नंबर ऑफ सीट्स, डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम, कैंडिडेट परफॉर्मेंस सब पे. एंड ये कट ऑफ हर एक कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट एंड कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है. And MCC and state authorities publish this during the counseling rounds. There are 3 or 4 counseling rounds for that. अब ये हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें फॉर 24 एंड 25, तो 25 में स्कोर्स हैव बीन ड्रॉप्ड एज कम्पेयर टू 24. In 2025 NEET exam, there were no candidate who scored 720 marks. Actually, the highest score was 686 with AIR 1. And the qualifying marks do not guarantee admission because actual closing cutoffs are typically much higher for the top colleges. So ये बात हो गई ऑब्जर्वेशंस की. अब हम बात करते हैं काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट विच इज़ आफ्टर द नीट रिजल्ट्स. तो पहले तो नीट रिजल्ट मीन्स डिक्लेरेशन होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी एंड ये नीट रिज़ल्ट पब्लिश करेगा आफ्टर द एग्जामिनेशंस एंड उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द काउंसलिंग. मार्क्स डज नॉट मैटर्स बट ऑल इंडिया रैंक मैटर्स. और बात करें काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की, तो ऑल इंडिया कोटा से AIQ से जो फिलअप करें उनके लिए 15% सीट्स होती है in every college, and for state quota this is the 85%, the remaining ones. And during counseling candidates have to fill the choices of the colleges and courses और उसके seats allot होगी on the basis of rank, preferences, rules and seat availability. एंड आफ्टर अलॉटमेंट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और देन ज्वाइन दी अलॉटेड कॉलेज बाय स्टिपुलेटेड डेडलाइंस. अब लास्ट बात हम करते हैं टिप्स एंड प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रेटेजीज. इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द कैंडिडेट्स बाय द एस्पिरेंट्स दैट व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स. सो पहले तो स्ट्रेटेजीज बनाओ और स्ट्रेटेजीज में मेरा तो फर्स्ट मानना है कि पहले तो PYQ कंप्लीट कर दो, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस आर मैनी एज आई ऑब्जर्व्ड. लाइक 23 में भी उतने थे, 24 में भी उतने थे और 25 में भी उतने थे. सो इवन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ 24 and 25 इज़ वेरी डिफरेंट, बट द repeated questions are same, means the number of repeated questions are same. So most important is to practice the previous year question. अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की. तो फिर 180 मिनट्स होते हैं 180 क्वेश्चंस के लिए, मीन्स यू हैव 1 मिनट पर क्वेश्चन इंक्लूडिंग द OMR फिलिंग एंड चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ योर फिलिंग. सो दिस इज़ वेरी लेस टाइम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो आपको पहले से ही बायोलॉजी में ग्रिप पकड़नी है कि आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर दो. जिसके ज़्यादा होते हैं इट इज़ वेरी नाइस, बट एटलीस्ट इतने तो करने ही है तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे पाओ. एंड एट लास्ट रिविजन फार्मूला कॉन्सेप्ट शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंसेंट्स नोट्स हेल्प अस फॉर लास्ट मिनट रिविजन. लाइक आप ऐसे नोट्स में सिर्फ फार्मूला मत लिखिए, उसके साथ साथ कोई थियोरेटिकल टॉपिक्स भी होते हैं, कोई पॉइंट्स होते हैं जो फिज़िक्स में भी थियरीज पूछी जाती है और केमिस्ट्री में तो होती ही है. बायोलॉजी के लिए कंसाइंस नोट्स में फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, वो सब आप बना सकते हो. तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस. लाइक आपको विजुअल इतना अच्छा है तो फिर आप पहले फ्लो चार्ट्स पे बिलीव करो, लाइक एरोस एंड ऑल, और थोड़ा सा डेकोरेशन लाइक एक बॉक्स बना दो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बॉक्स बना दो तो आप हाईलाइट कर सको. फिर अगर आपको लिखने की आदत है तो राइट डाउन ऑल दी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स सो यू कैन रिमेंबर इट. मीन्स हाईलाइट करने का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी. सो अकॉर्डिंग टू योर पास्ट परफॉर्मेंस जस्ट
introspect yourself and do that. And at last, thank you all for viewing this video.